Good evening, Dr. Bedkar sir, Principal sir. It's my honor and pleasure to present myself in such a great August gathering. Shri Kumarswami Mahavidyalaya, Ausa, Latur is organizing this wonderful project of World Series, and very intelligent brains have presented themselves. And today I get an opportunity to present myself, in this kind of a platform. So first of all, I would like to thank Principal Sir, Dr. Bedkar Sir, for giving me this opportunity to speak over here. And I thank the organizing committee, the organizing team. I thank all the listeners, the audience. And today it's my pleasure to present my science. That is, what is homeopathy? What is homeopathic science? It is a new system of medicine, and definitely you'll find it has a perspective in various aspects, including the research. So, sir has introduced me. Thank you, sir, for your warm welcome. And definitely I will go with this. So, I will be moving my slides now. Okay, so I will start with a prayer. Sarve Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhave, Om Shanti Shanti Shanti. May all sentient beings be at peace. May no one suffer from illness, and may all see what is health. So सबके लिए प्रार्थना, आरोग्य के लिए प्रार्थना कि सभी सुखी हो, सभी को रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय रहे, और सब लोग अच्छी से अच्छी हेल्थ, स्वास्थ्य जो है. I will start with my presentation. I started with the prayer to the, about the health. So everyone should enjoy health. As we know that India is also very rich with the medical field, and especially Ayurveda and Siddha. So we are having that culture, we are having that kind of aspects with us. But a new science reached to India, and that is homeopathy. So I salute my founder of homeopathy, Dr. Samuel Christian Frederick Hahnemann, who has said that the mission of a physician is to cure the sick. So I salute Mazatenna Naman. And this is my institute where I'm working since last 28 years. It is my great honor that I was a student of this institute. I have become a demonstrator, reader, lecturer, professor, and then I become I was there for the role of acting principal, officiating principal, and so on. Nowadays, I'm working as an ISO management representative also. So one of the best institute of the Maharashtra, and I, because of the university, I had to go to all parts of Maharashtra, and I see other colleges. Yes, definitely I can claim that the one of the institute which is really with all kind of equipments, with the departments, with the wonderful faculty we are having. So this is just introduction, and very recently we got B++ NAC grade. With this, I will start my session now. That is what is homeopathy. Many of us must be knowing what is homeopathy. During the time of COVID-19, we have become familiar about those pills, small pills. Sabudana Goli people are saying. But mind you, that medicine has gone to all part of the India and world. So during COVID-19, this medicine has done a blunder. And people realize the strength and potential of this medicine, homeopathy. And everyone, I got opportunity to start with first Malegaon. We started distributing prophylaxis medicine in Malegaon. And then I was a coordinator at Nashik city, city level. So the commissioner of Nashik was there with me. And then in the 6th division of Nashik, near about 17 lakh population, we have distributed this medicine. And people, were in a bad need of medicine. And during the time of crisis, this medicine has done a great job.
So I think this recognition is there. But mind you, this medicine is a medicine which is supported by the people. Many times we feel that that the democratic way this medicine has worked. लोकांचा सपोर्ट जास्त मिळाला आहे rather than government support. And because of that, number of people are taking these medicines and wonderful benefits are there in comparison with the other conventional medicines. So here when we are saying homeo means similar. Now why we want to use this word similar? The very important thing is homeopathy is a method of curing suffering of a person by the administration of a drug which is been experimentally proven to process the power producing similar. Now I'll make it little easier for everyone. कांटा कांटे को निकालता है, या तो शोले का डायलॉग सबको मालूम होगा, लोहा लोहे को काटता है. तो द सिमिलर प्रिंसिपल होम्योपैथी इज वर्किंग. जब हेल्दी है हम और वो ड्रग सब्सटेंस आपको दिया जाए तो उसके लक्षण आप में आ जाते हैं. एंड व्हेन यू आर sick with similar kind of symptoms and when this medicine is given, it has shown curative power. वो बीमारी को ठीक कर देता है. So that is homeopathy. Very important. Homeopathy, when we are saying what is homeopathy, people only see that white pills, साबुदाने की गोली देते हैं. I remembered 96 I started, because of my parents, I started my journey from one small rural area. people बोलते थे कि खांसी के लिए भी यही दवाई दे रहा है और बुखार के लिए भी यही दवाई दे रहा है. So people were not knowing about homeopathy. So I started with a struggle. And mind you, being an urban person, going to the rural area, their language is different, my language is little different. To understand that language, I had struggled. But definitely with the timeline, I think, homeopathy ने इतना करिश्मा करके दिखाया है कि patients want only medicine. My students, some of them must have joined in YouTube. They are knowing my Saturday and Wednesday, it is like a jatra. So we near about 150 200 patients are standing in a line with my OPD. So that is the beauty of homeopathy. And people are getting relief with the homeopathy. So the basic principle of homeopathy, the axiom of homeopathy is similia similibus curenter. So likes cure like. Likes cure like. Our, the founder of homeopathy, Dr. Hahnemann, he was translating one book, Culens Matre Medica. वो translate कर रहे थे. और उनको ऐसा पता चला कि क्यूलेन करके जो मेडिसिन है, सिंकोना बार करके जो मेडिसिन है, वो मलेरिया जैसे लक्षण ला रही है आदमियों में. अगर हेल्दी लोगों को जिनको कोई बीमारी नहीं है, अगर उनको वो मेडिसिन दिया जाए, ये सब्सटेंस दिया जाए, तो उनको बीमारी आ रही है. तो वो उन्होंने पहले देखा, फिर उनको उसमें समझ में आया कि अगर ये मेडिसिन सेम मेडिसिन ऐसी ही मलेरिया जैसे बीमारी में दी जाए तो मलेरिया ठीक हो सकता है. व्हाट इट कैन प्रोड्यूस, इट कैन क्योर. तो काटा काटे को निकालता है. That is how he learned. And then he tried to, 10 years, 12 years, he was doing extensive experiment on this. And on a scientific ground, he proved that there is the principle is there, similia similibus curenter, likes cure like. What it can produce in healthy being, it can cure in the sick person. If you're finding little difficult, please let me know. We will have one-to-one talk also, interaction also in between also. So no problem as such. समझ में आ रहा है सबके? समझ में आ रहा है? Are you getting my language? Yes, thank you. So now there are certain principles. Usually we get critics that homeopathy placebo effect hai, homeopathy this hai, that hai. I should touch that point. Mind you, it has based on certain laws, right? Principles, just like any science is based upon some facts. Similarly, you'll find this law, there are certain laws on which homeopathy is governed. Homeopathy is not, the people sitting in some shop and giving some homeopathic medicine is not homeopathy. एक स्टूडेंट जो है 5.5 साल का BHMS डिग्री कोर्स करता है, उसमें वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन सब सीखता है. डिसेक्शंस करते हैं हम सब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. ब्लड इन्वेस्टिगेशन वी कैन कैरी आउट, HB परसेंटेज से लेके ब्लड काउंट, CBC, वी आर यूटिलाइजिंग एटो एनालाइजर, वी आर यूजिंग ऑल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स in our hospitals.
So homeopathy is based upon science. So there are laws, the law of similia, law of simplex, law of minimum dose, doctrine of drug proving, doctrine of drug dynamization, doctrine of chronic diseases, doctrine of vital force, doctrine of individualization. पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं, बट व्हेन विल गो वन बाय वन तो उसको मैं बहुत आसान करके बताता हूं, क्योंकि होम्योपैथी व्हाट आवर मास्टर सेड, होम्योपैथी इज कॉम्प्रिहेंसिव, सबके समझ में आने वाली चीज है, तो ये सबको मालूम होना भी चाहिए होम्योपैथी क्या है। तो इसके लिए आज मैंने बोला कि आज मैं मेरा साइंस जो जिस पे मैंने मेरा नाम कमाया, जिसने मुझे बड़ा बनाया, उसके लिए मैं कुछ करूं और आपके सामने ये चीजें रखूं। सो I'm going to put some pictures also, to distract you people, and there should be no monotony. So we are using a drug like this, such a wonderful, beautiful flowers, and it is called as digitalis, and we are making medicine which helps in cardiac conditions. लोग बोलते हैं कि खाली chronic condition के लिए होम्योपैथी है, नहीं, even angina pain है, myocardial infarction. Yesterday we were discussing about myocardial infarction. So digitalis like medicines plays a role. Now we are coming with the first law, similia. So I told you, likes cure likes. जो चीज वो बीमारी बना सकते ही, वही बीमारी वो ऑब्जेक्ट ठीक भी कर सकता है, ड्रग सब्सटेंस. So the word homeopathy is a Greek derivation from homeos, means similar, and pathos means suffering. According to this system, the choice of medicine is fundamentally based upon the principle that the medicines must have the capability to producing. यानी इफ आई एम टेकिंग सिंकोना बार्क, एक मेडिसिन है समझो, वो मैंने खाई, आई एम हेल्दी राइट नाउ, आई विल डेवलप सिम्टम ऑफ मलेरिया, बट अगर वो मलेरिया जैसे पेशेंट में वही मेडिसिन दिया जाए तो मलेरिया ठीक कर सकता है. सो आर्सेनिक एल्बम वाज हैविंग पावर टू प्रोड्यूस सिम्टम्स लाइक COVID-19 in a healthy condition, but when given to those people who were suffering with COVID-19, they recovered from arsenic album. I will tell you, CCRH is one of the central core research committee of homeopathy. उन्होंने 1 crore population we have covered with arsenic album 213, and among them my institute, I feel very proud that 37 lakhs medicines, means that medicines were given by our institute. And I will tell you, it is not a work of one person. The whole organization day and night was working and preparing medicines, because there is no manufacturing companies like this. We are getting dilutions, we are getting globules different, we have to prepare them. And then, all the professors से लेके सब लोग काम कर रहे थे day night, जैसे कारखाने में, इंडस्ट्री में काम चलता है वैसा. So law of similia, I think I made it very clear. Similia similibus curenter, or likes cure likes. What it can produce, it can cure. आपके सबके समझ में आ रहा है? Yeah. Are you getting my language? If you're finding difficult, let me know. Now there is one medicine, what is called as platinum metallicum. Platinum is one of the costliest medicine. We are preparing medicine from that also. So some female complaints, other complaints are getting covered by this medicine. So of course we are not giving in this form. We are not giving in a crude form. We process it, we refine it, we break down, we reduce it to such a small element. You cannot see platinum in the medicines. आपको खाली गोली दिखेगी, व्हाइट सफेद कलर की साबुदाना जैसी गोली जो है वही दिखेगी आपको. ठीक है? Now we are coming to the next law, law of simplex. A single remedy at one time. Nowadays, if you go to some physician and tell him that I'm having diabetes or cardiac complaints, he will write 12, 13 medicines on the prescriptions. देखिए ना, सुबह 13 medicine, शाम को 8 medicine. People are consuming medicines continuously. The beauty of homeopathy is that we try to find out one single remedy. We will sit in front of patient. First, we will ask him what are the complaints. Then we will try to find out what are the signs. Then we'll examine the patient. We'll see the mind symptoms, and we'll build one picture: Prakruti, constitution. And then we will select one remedy. Ramban एकच औषध असतं, not the all. So we select one remedy from this.
So in one of the book, we call it as a Bhagavad Gita, organon of medicine, Bhagavad Gita of homeopathy, where master, his founder, Dr. Hahnemann, has talked about why we should go with single remedy. Because if you want to know the strength of homeopathic remedy, what it can produce, it is proved on healthy human being, just like an experiment. Animal experimentations, everybody must have seen animal experimentation, but human experimentation. We are giving these medicines to the healthy people, and after giving it to the several hundred people, and then we try to find out symptoms, what they develop with those substances. So usually our homeopathic students are doing this job because other people are not easily ready to do this kind of work. And the homeopathic students, they build materia medica. So one drug is proved at one time. So how we can give two drugs or three drugs at a time? In homeopathic practice, I had seen nowadays people are modifying it, that they are giving 2-3 remedies at a time, or they are giving some prescriptions from outside the bottles. I think that is not a real homeopathy. So homeopathic remedies were proved singly, and the materia medica was built on observed effects of the drug singly. So that is why we have to use medicine, single medicine at one time. The real homeopath, sir, will give one remedy. I will tell you one of my story of my patient. He's an international shooter. He's going for the Melbourne. He want to go for first Chennai, and from Chennai to Melbourne for the international competition. So he came to me. The biggest problem is when we are giving medicines, then the biggest problem is what? They should not come in a dope, that test, so they should not come in that. So I'd given one very simple single 4 pills I'd taken, the indicated medicine I placed. Sometimes it may contain some other medicinal substances which are not accepted by some other agencies. So I kept it in a sunlight so it will get evaporated, and I just given 4 pills. He said, "Itna hi doctor sahab, itna hi diye, kya fayda hoga mujhe?" I said, "You don't worry, you go." And then thereafter also, I also moved to Pravara Medical College for some official deputation, and he also went to the Chennai. And early morning he called me, "Doctor sahab, 4 ke 4 patthar ek saath nikal gaye." So that is the beauty, that is why we are saying a single remedy. Still he's coming to my consulting, and his, every time he brings a patient with the renal calculi, that is renal stones. So that is the beauty of homeopathy. Single remedy can work. Only one remedy has to be given. So the people who are practicing 3-4, of course it is their way of practicing. I cannot comment on them. But the thing is, it is not a scientific way of homeopathy, but 4 patthar marenge, 1 patthar to lagi jayega. That kind of system, some people may go with. So it may comes with the beginners, of course, but I think the experienced person will not go with 4 remedies at one time. Now this is a very simple remedy for everyone. Everybody, one must have recognized this medication, and this is allosacrotina. Okay, apna kya bolte, Corford. So we are having wonderful remedy from this, and especially for the stool complaints and the piles complaints, mulvyad, bawasir bolte ho jisko. Wonderful remedy comes from this. Now we are coming with the law of minimum. Deliberately, to make you familiar with some homeopathic remedies, I kept some pictures in between, and then I'm explaining their potential also, and then we are going with the laws. Otherwise, it will become little monotonous for you people. So the law of minimum, the sustainable, medicines, when we are saying, so minimum dose. Ayurveda, in Unani, you'll find there is a crude substance you can see, churna. चूर्ण में है या कोई काढ़ा दे रहे उसमें है, दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे होम्योपैथी में you will not find it mostly. So the medicine is broken down to the very small finest particle. Minute doses has to be given. ये principle है homeopathy का. So what we are saying, minimum means what? What exactly we are doing? So we are taking a crude substance and we are breaking it down, and we are going to that level, nanotechnology. IIT power, these people proved, that nanotechnology is there with the homeopathy. So mind you, we are going with the finest particle, and mind you, the finest minute particles are having, effect
एक बड़ी लकड़ी मैं तोड़ता हूं तो इजीली टूट जाती है, लेकिन मैं जितना तोड़ते जाता हूं उसको वापिस वापिस वापिस, आई विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू यूज. So mind you, we are going to that level of breaking, and more energy is is coming up. So हम crude substances use नहीं करते, right? Now there is one of the very important remedy, rhododendron, and beautiful flowers you can see. It is used for rheumatism and some milk complaints. We are using this remedy. Now we are coming with the doctrine of proving, drug proving. Now this is one of the essence of homeopathy. ड्रग प्रूविंग यानी क्या करते हैं हम लोग, एक मेडिसिनल सब्सटेंस लेते हैं और हेल्दी ह्यूमन बीइंग को उनको दिया जाता है एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए. हेल्दी लोगों को दे डेवलप सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स, वो लक्षण डेवलप करते हैं. दे राइट डाउन इन देयर डायरी एवरी डे, एंड देन वी कलेक्ट दोज डायरीज ऑफ 100 people or 200 people, and that is how we can come to know what it can produce. When we realize what it can produce, we get a knowledge what it can cure. So we are using similar, whenever there is a similar illness, disease, we are using that remedy. So it is one of the very important process, scientific process we are going with. So it is not haphazardly done it. The pharmacopoeia of homeopathy in India laboratory, they are given certain guidelines, just like ICMR is giving guidelines for the research, because there are ethical issues, there are some logical issues, and we have to solve them. So naturally we are using this process, and very meticulously it is done. Very meticulously it is done. So we know the strength of drug. हमें वो मेडिसिन की क्या पावर है, क्या खासियत है, ये पता चल जाती है ड्रग प्रूविंग करने के बाद में. Now this is one of the very familiar name, I think most of you may be knowing. Arnica shampoo, Arnica hair oil people are using. Arnica is one of the best remedy for mukamar lagne, bruises. If there is any kind of bluish discoloration, हिरवा नीला झाला, काला झाला, जब हमें मार लगती है लेकिन खून नहीं आता है, तभी ये मेडिसिन सबसे बढ़िया काम करता है. So I had seen number of cases with Arnica. So whenever there is any kind of pain after the injury, you can think of Arnica. You can have this medicine at your home, no problem. There is no side effect. There is no problem with this medicine. 4 गोली की 3 खुराक लेनी है, right? Very simple way we can take a help of this medicine, Arnica. हर एक के घर में होगा तो भी चलेगा, लगते रहता है, बच्चों को लगते रहता है, गिर गए, लग गया, लेकिन जहां पे खून नहीं निकला है, right? We can think of this remedy. So drug substances are put on human being because एक एनिमल पे क्यों नहीं करते, सवाल आएगा, है कि नहीं? एनिमल पे क्यों नहीं कर रहे हम लोग? तो एनिमल पे इसलिए नहीं करते, एनिमल की फिजियोलॉजी डिफरेंट है, एनाटॉमी डिफरेंट है, एंड दे कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट दे आर सफरिंग विद. एनिमल आंखें बता नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ हो रही है, बट ह्यूमन बीइंग्स आर कमिंग एंड दे आर नैरेटिंग व्हाट काइंड ऑफ हेडेक दे आर हैविंग, थ्रॉबिंग पेन, ठस ठस होते डॉक्टर, सो दे आर एक्सप्लेनिंग अस. So that is why we are, we are taking help of human beings, and we are getting this medical, the power of medicinal substances. So even physiology, anatomy is very different in animals. Which animal will consider? Usually, animal experimental studies, they are using rabbits and guinea pigs and, mice. That's it. Okay. But mind you, of course, they cannot come with, the mind symptoms. They cannot say, मुझे ठंड बज रही है, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे ये तकलीफ हो रही है. So mind you, that is why they are considering human beings over here. Now this is also one of the remedy, the biology people must be knowing. This is a plant which eats the insects. So Drosera, and see the beautiful plant, but having that killing instinct. And mind you, this plant is wonderful remedy for cough and cough-like symptoms for us. Nowadays, there is one cough is going on. मालूम नहीं आपके सबके जगह पे है कि नहीं, लेकिन हमारे सिटी में थोड़ा गला पकड़ता है, सर्दी हो रही है, and then person cough and cough. जैसे लेट जाता है तो खांसी चालू हो जाती है, उबड़ लेते डॉक्टर साहब. And that cough, is not ending. This is one of the best remedy, Drosera. But one thing I want to say, only 2 dose देना है इसकी, ज्यादा डोज नहीं देना है इसकी. तो chronic cough जो है, right, it can be cleared by this remedy. So this is
another wonderful remedy, plant, medicine, what we are preparing. Now there is a principle what is called as a doctrine of vital force. Now tell me one thing, a dead man and a living man, एक जिंदा है, मर गया है, उसमें फर्क क्या है? हेड है, आंखें है. Then what is gone? What is gone? That energy which drives the body. है ना? दो गाड़ी है, एक चलने वाले, एक ना है, एक में ड्राइवर नहीं है, एक में ड्राइवर है. So similarly, that difference is there, and that is what we call it as a vital force. हमारे बॉडी में ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें अच्छा रखती है. So that is what we call it as a vital force. So this vital force help to maintain our physical body, mental, all conditions. And mind you, very important, vital force, why we are learning, बीमारी में क्या होता है फिर vital force का? बीमारी में ये vital force deranged हो जाता है. Deranged यानी वो कमजोर हो जाता है. And that is why we acquire infections. Now in modern medicine they consider that उसका resistance कम हो गया, उसकी immune system कम हो गई. But we are calling that उसकी जो ऊर्जा है fight करने की, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है. Vital force is getting reduced. चैतन्य शक्ति, the right perfect translation of vital force is चैतन्य शक्ति, चैतन्य देने वाली. So mind you, homeopathic medicines reaches to that vital force. That is why they are not in a crude form. They reaches to the vital force, they stimulate the vital force, and mind you, they bring out that vital force to their level, and that is why the disease is getting cleared from root. जड़ से बीमारी को हटाता है होम्योपैथी. Why we calling it as? Because ये अपनी अंदर की ऊर्जा को इतना प्रेरित कर देता है कि अपनी बीमारी अपने आप चली जाती है, वापस वो बीमारी नहीं आ सकती. So mind you, that is the beauty of this science. Even the cases of non-communicable diseases are also very important. So I'm treating diabetic patients, I'm treating hypertensive patients. Of course, I'm not boosting myself, but I'm telling what homeopathy can do. We are the instruments. The homeopathy is a science. So this is about there are some questions coming on, but I will answer them at the end. Yes, definitely. So this is something, Ayurveda doesn't consider this. They consider only Vata, Pitta, Kapha, right? When Vata is more, then they prescribe medicine according to that. Chinese medicine, they believe in Yang and Yin. These are the two forces present in the body, and when the dominance is there, we can treat them. Similarly, Greek medicine is there. They are saying 5 humors. So homeopathy is very different than them. They are considering, yes, definitely that Chaitanya Shakti is where ruling, is doing a wonderful job in the body. Now, ये फूल आपने कभी ना कभी देखे होंगे. It is very close to our झंडू के फूल, झंडू और झंडू, है ना? So this is one of the very important remedy which you can keep at your place. You can keep at your home. Calendula 200 potency, power रहती है उसकी 200 potency. If there is any kind of open wound, जहां से खून निकल रहा है, जहां पे आप दिख सकते हो कि खुली जख्म है, yes, definitely calendula is playing such a wonderful role. The healing is very fast. ये कैलेंडुला पाउडर मैं प्रैक्टिस करता था कभी, मेरा इंटर्नशिप चालू था. I was working in one of the hospital, and the patient developed bed sores. जो ओपन जख्म हो जाती है ना, बेड सोर्स, लेटे लेटे बहुत देर दिन पेशेंट सोया रहा. So I insisted on that physician कि मुझे होम्योपैथी यूज करना है. Of course I was working in allopathic hospital for training. He said no initially. Then I insisted further, and he said, okay, 2 wounds you treat, 2 wounds I will treat. So he was using betadine, and he was putting that betadine gauze over there, and I was using calendula, the tincture is there and diluted, and then I was cleaning the wound. And mind you, wonderfully, my side wounds healed very fast. And then physician said, you take this care of this 2 wound also. So that is how we really get the strength. My confidence has boosted with my patients. My patients are my teachers. My patients taught me.
Patients were insisting, give me medicine for hypertension. Nothing will happen to me. You give me. For scorpion bite, बिच्छू का डंक लगा है. मैं बोला सिविल हॉस्पिटल में जाओ. नहीं, you give it. Medicines are there. And I started giving in initial phases. And mind you, I boosted my confidence like anything. So I'm very, very thankful. I declared this on this platform that I'm thankful for my patients who are giving me such a great support and confidence. So various aphorisms, again, Dr. Henneman in Organ or Medicine, he talks about this vital force in a detail. Just for your reference, I'm not going with a line by line, but understand, that every human being is having this energy. And this vital force is governing him. You can think, you can write, you can read, you can digest, you can do everything because of this energy present in the body. You can fight against disease with this energy. If this energy is getting reduced, deteriorating, then you will catch a certain conditions. Now, another beautiful flowers, pulsatilla. And usually, every homeopathic doctor knows pulsatilla means female complaints. So most of the female complaints, when the girl lands into pubertal age, adolescence age, when she, goes with her first menses and she develops some kind of diseases, yes, definitely we can think of this remedy, what is called as pulsatilla. So I will not go with this, but yes, definitely what medicines we are preparing is, there is a process what is called as potentization. We are reducing our drug substances and we are increasing the energy by the process of potentization. So there are two processes. For insoluble substances, we are using trituration. वो देखा होगा ना आपने सफेद कलर का और वो mortar and pestle people are making. So we are using that. And for succussion, for the soluble substances which get dissolved in water and other substances. Now natrum mood means your very favorite, हमारे घर की डिश ये हम खाने में नमक डालते ना, नमक वो नमक है ये, salt. So that is a natrum veridicum. So medicine is prepared from namak, but you will not taste namak in your sweet pills because it is reduced to that extent. Substance कम करते हैं लेकिन उसका energy ज़्यादा बढ़ाते हैं. So mind you, vital force is also energy. Our medicines are also energy. So that is why they can react with each other. Our medicine has power to bring that vital force to the level, maximum level, where a person can enjoy a good health. There is a doctrine of chronic disease. We call it as miasm. Miasm means miasma. Miasma means bad air. People were using this terminology in ancient time, Latin time. But mind you, chronic diseases, why there are chronic diseases? Acute diseases means bukhar aa gaya, thandi aa gayi, naak beh raha hai, sar dard abhi aaya, abhi gaya. That is an acute disease. But chronic यानी rheumatoid arthritis. Someone had mentioned about rheumatoid arthritis. Is there any remedy for rheumatoid arthritis? So mind you, we are having remedies for rheumatoid arthritis also, but we are not treating the disease. We are treating the sick. That is the basic problem. Whatever disease patient may come, if we are getting signs and symptoms of the patient, we can treat the patient. So rheumatoid arthritis, I had seen n number of patients, and my OPD near about 60% of the patients are suffering with this rheumatism, rheumatoid arthritis, gout, what we call it as uric acid conditions. So definitely, what we are talking about chronic disease, what is the reason behind them? There are fundamental causes. Fundamental causes means three miasm. Just like, in Ayurveda, we say three dosha, Vata, Pitta, Kapha. Same thing, Sora, syphilis, and psychosis. These are the three basic fundamental, just like Vata, Pitta, Kapha. They are playing role. We have to treat those miasms and the disease will get clear. Now, this plant is also, everybody must be knowing, Thuja occidentalis. One of the lecture was there. I remember wonderful lecture. And she was talking about the database in our series only. And she had shown this plant substance. So Thuja Vidyetsapan, we call it as, and we are preparing medicines from this also. Of course, don't take medicines, without much concern with the doctors, but take medicine with the help of doctors. Doctors are learning for 5.5 years. They are going for PG another 3 years. So 8 years and 6 months they are going with this courses. They are learning in a depth, and then you take medicines from them. So Thuja occidentalis, one of the best remedy for warts. Masse aate na, masse body mein.
right? So that is one of the remedy, but of course it has a wide range of applicability. I will not just restrict it to the warts. So here I finish with the very important 7 cardinal principle. If you want to know basic of homeopathy, so you should know what is homeopathy and what are the 7 cardinal principles, right? One by one we are seen. And along with that, I have introduced some drug substances also. Of course, there are 4,000 drug substances, but the familiar one I have collected for you. So it will become easy, and all faculty members are there. So it will become easy and you'll find homeopathy close to your heart. Thank you. So now we'll go with how this medicine works. You know, what is the modus operandi? So here homeopathic medicine is administered based upon symptoms. We are not prescribing diabetes के लिए medicine नहीं देते हैं. But the symptoms what they are having, the patient is having, we will prescribe on that symptom similarity. Symptom देखेंगे पहले. We want to learn symptom. Why homeopath takes a time? Because he requires to perceive his patient and he wants to know all facets of the patient, the physical aspect, the mind aspect, the emotional aspect, his life situation. And mind you, that is how he'll try to learn the patient, and we collect symptoms. Of course, we are not prescribing on common symptoms like typhoid में fever आना, बुखार आना तो common है. But what kind of fever? If there is a fever with a thirstlessness, पानी की प्यास ही नहीं लग रही, so it becomes very important for us. We collect such a symptoms, uncommon, rare symptoms, which is not common with the typhoid patients. We collect those symptoms and we try to match with our Matre Medica, and then we prescribe our medicine on the basis of principle, what is called as similia, similibus currenter. So affects the morbidity, deranged vital force. So this medicine goes into human body, affects the deranged vital force. तो क्वेश्चन आएगा, ये मेडिसिन हम लेते हैं, गोली मीठी लगती है, मीठी गोली में ड्रॉप्स डालते हैं, वो ड्रॉप्स मेडिसिन है. मीठी गोली माध्यम है, व्हीकल है, इट इज जस्ट अ व्हीकल. जैसे कैप्सूल में कड़वी गोली, कड़वी पाउडर भरी जाती है, उसी तरह से ये मेडिसिन जो है वो इसमें ही देना है. कुछ लोग डायरेक्टली वो लिक्विड मेडिसिन डाइल्यूशंस मिलते हैं मार्केट में वेरी इजीली, दे आर टेकिंग इट वेरी रॉन्ग. यू पुट इट in a drops, those drops on the globules, and then take it. So as soon as you'll put it on a tongue, the nerves will start playing a role and your vital force start reacting over there. It doesn't goes to the stomach and intestine and will get absorbed and then will show effect. Mind you, I had seen a patient, I got a news that one patient was admitted in one of the biggest neurology, this hospital under the neurologist, and she was suffering with Guillain-Barré syndrome. Her hands and legs were not moving at all. And then the patient's relative came to my consulting and asked, what to do now, Dr. Saab. Someone told your name and let me know what we should do. And then what I've done is, I have done very simple thing. I asked what symptoms you are getting, similar symptoms, and then I had to find out similar remedy. They said one thing we can notice, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, उनके हाथ पांव नहीं हिल रहे, लेकिन with the face she is showing anger, गुस्सा दिखा रहे, राग येतोय त्यांना, ओरडता आमच्या. And I remembered very simple remedy because other symptom नहीं मिल रहे थे, हाथ पांव नहीं हिल रहे, कुछ नहीं हो रहा, पेशेंट कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा, खाली expressions बता रहा है, चिल्ला रहा है खाली. And then I prescribed very simple remedy of Nakswami. Some of students must be knowing this remedy, and I sent those people with the 3 doses only. I think next day she started moving her fingers and toes. हाथ पांव की उंगलियां हिलाने लगी. The patient's relative came to me and they asked, now we want to take out that patient and you take it to your consulting. I said, in my consulting, I don't have any place, but I will take you to my medical hospital where I'm also medical officer and I'm also HOD and a Department of Community Medicine. I will place you over there. So I took that patient over there, and mind you, within 7 to 8 days, with homeopathy and physiotherapy, of course, I will not say homeopathy alone, but physiotherapy, that lady started walking, at least she started going to the toilet and bathroom, and mind you, within 3 months, she recovered fully. So that is the beauty of homeopathy. So it depends upon symptom similarity. So it affects the nerves, what I said, and mind you, it removes the disease. It helps to grow vital force, it helps to strengthen the vital force, and it removes the disease condition. And mind you,
That is how we, you'll find the disease is removed. इसलिए बोलते रूट कॉज से गया, जड़ से गया, मुळापासून आजाराला मी नष्ट केलं. Now there is another remedy of medicines we are preparing from this substance, aurum metallicum. I think the chemistry people are very familiar with this. So I know there are some botanists, there are some the people from the chemistry department, they are there. So I place this substance deliberately, and mind you, we prepare medicine from aurum metallicum. So you will not find aurum metallicum with the globules, that pills, sweet pills, but we potentize it to that level. You cannot see that substance, but it has a great potential, and this remedy is one of the best remedy. Where we are using. I personally use this remedy for the people who are depressed with the life, they lost hope with the life. जी के क्या फायदा है, right? I want to commit suicide. This kind of depressive states, this medicine acts wonderfully. So definitely it has to be taken under the guidance of the homeopathic consultants. And so I will not go with this. I have explained you that minute dose goes into body. It really boosts the vital force, and then the disease has been moved. Now there is another remedy, Aconite napellus, such a beautiful flowers. And here this remedy is used for all acute conditions. Patient आके बोलता है मुझे अभी के अभी कुछ करो. Usually it happens that homeopaths only deal with chronic diseases. जो पुरानी बीमारी है उसके लिए है. नहीं. This Aconite napellus is one of the very important remedy when patient complaints appears acute. So Aconite is one of the remedy. How to take this medicine? Homeopathic medicines are usually taken in form of small pellets or tablets. These pellets are placed under the tongue, allowed to dissolve. Don't chew. चबाना नहीं है, उसको dissolve करना slowly. It is important not to touch the pellet. ढक्कन में लेना है और ढक्कन से लेना है. छोटा बच्चा है समझो 2 महीने का 3 महीने का, तो क्या करेंगे? तो पिलेट जो है चम्मच में ले लीजिए, उसके जो माता जी का दूध है, द ब्रेस्ट मिल्क, उसमें डालिए, उसमें डिजोल्व करिए, वो मिल्क बच्चे को पिला दीजिए, है ना. न्यूनेट है समझो, 0 to 28 days है, बच्चा कुछ ले नहीं रहा है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, we give this medicine to mother also, so she can feed baby and the baby will get dose. Or sometimes we apply on a dermatol, means skin, अपने त्वचाला आपण ते औषध लावतो जेणेकरून तिथून ऍब्झॉर्ब होऊन होईल. बिकॉज दिस मेडिसिन ऍक्ट्स ऑन द नर्व्स. इट डझंट गेट इंजेस्टेड, इट डझंट गेट ऍब्झॉर्ब, इट डझंट गेट assimilated. It has to act from nerves. So there is another remedy, belladonna, severe headache, head pain. We are using this remedy. So it is recommended. Usually I am telling, over here they are mention about this, but I tell very simple thing. 4 गोली सुबह नींद खुलने के बाद तुरंत लेनी है. ब्रश से पहले. हमारा टूथपेस्ट में क्या रहता है? कोलगेट और कोई दूसरा. It contains some kind of peppermint or some other chemical substances. You are washing your mouth and then you are taking pellets. It will have no effect. So you take before brushing. बासी मुंह लेना है, 4 गोली वो भी चूसना है, फिर 10-15 मिनट के बाद में ब्रश करिए. 330 एक डोज लेना है, आगे पीछे टेस्ट वाला कुछ नहीं लेना. You can take water, but you cannot take milk or tea. And then night after your dinner is over, at the after half an hour when the test is reduced, जबान पे जो टेस्ट है वो कम हो जाए तभी लेना है. बिल्कुल सोते समय, bed time you can take. So this is very important. You cannot keep this medicine near the agarbatti, ittar, perfumes. Otherwise, this medicine will not work. It will lose its potential. So usually we are keeping it in such a place that it will not come in contact with some kind of smells and odors. So that is one of the very important thing we have to care of. We don't have to take these pills on a hand, but we have to take it in a lid of the bottle or maybe a spoon of the spoon. Now this is again a familiar medicine. That is allium, sepa, kanda, प्याज. So we are making medicine from प्याज. मुझे बताइए प्याज काटते समय क्या होता है? Can anyone tell me? Can anyone tell me? प्याज काटते समय क्या होता है?
आंखों में आंसू आते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल जैसे ये प्रोड्यूस करता है आंखों में पानी, वैसे ही जिसके आंखों में पानी आ रहा है उसको ये मेडिसिन दिया जाता है। सो माइंड सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर, या लाइक्स क्यूअर्स लाइक्स, है ना, वही प्रिंसिपल है, समझ लीजिए इधर भी, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एलियम सेपा। देन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, वी यूजुअली सेज कच्चा प्याज नहीं खाना, कच्चा लहसुन नहीं लेना, कॉफी नहीं लेनी, रॉ ऑनियन, रॉ गार्लिक हैज टू बी अवॉइडेड, द कॉफी शुड बी अवॉइडेड। व्हाई वी आर टेलिंग दिस? Because the certain substances present in this kind of food substances or drinks, they may reduce the action of our medicine. They may hamper the action of remedy. वो कम कर देगा एक्शन करने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये चीजें मत खाइए। अभी हम बोलते हैं लहसुन तो कच्चा कहाँ खाते हैं हम? आपकी जो हरी चटनी बनती है, लाल चटनी बनती है, उसमें क्या डालते हैं? कच्चा लहसुन जाता है। तो कच्चा लहसुन नहीं लेना है ना। मसाले डोसे में डालते होंगे, कि वो चटनी बनाते उसमें डालते होंगे, अपने लाल चटनी बनती है उसमें डालते हैं। तो वी हैव टू अवॉइड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर सब्सटेंसेस हैज टू बी अवॉइडेड। बहुत हम लोग इत्र भी लगाते, काफी इत्र लगा लेते हैं कि नहीं? तो माइंड यू, वो इत्र भी ज्यादा काम नहीं करने देगा वो मेडिसिन को। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, परहेज है। परहेज यानी खाने में थोड़ा सा जो चीजें मना है, मना है। एंड देन पेशेंट सेज कि पूरा फिर हम मेडिसिन नहीं लेंगे, पूरा जिंदगी भर नहीं खाना क्या हमें? मैं बोलता हूँ खाली मेडिसिन जब तक ले रहे हैं तब तक आप न मत लीजिए चीजें, ठीक है? तब तक तो परहेज कर सकते हैं। बीमारी को तो रोकना है तो परहेज भी करना अच्छी बात है, क्योंकि कांटा वहीं पे रखे, मलम लगाने में कोई मतलब नहीं है। हमारी होम्योपैथी में बोलते हैं मेंटेनिंग कॉज अगर है, खिला है जूते में और ले रहे मेडिसिन जख्म को, तो क्या फायदा है? वो जख्म कब ठीक होने वाले हैं? तो पहले तो खिला निकालिए, फिर जख्म भी ठीक हो जाएगी। तो मेंटेनिंग कॉज हैज टू बी रिमूव्ड और रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। अभी मैं आ रहा हूं कि होम्योपैथी के साथ में यूजुअली आई एम गोइंग विथ माय प्रैक्टिस, आई गो विथ न्यूट्रिशन। एक डिटेल में मैं बात करता हूं न्यूट्रिशन के बारे में। यूजुअली द वल्नरेबल ग्रुप्स आर द फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या चिल्ड्रन, व्हाट शुड बी डन, राइट? तो डाइट रेजिम मेरा बहुत सिंपल है। बहुत लोग आते बोलते कि एनीमिया है, खून की कमी है, क्या करें? व्हाट वी शुड डू? आई गिव वेरी सिंपल डाइट। दिस इज माय फॉर्मुलेशन, परफेक्टली माय फॉर्मुलेशन। मैं बोलता हूं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अल्टरनेट डे, सोम, बुध और शुक्र, एक दिन छोड़ के आप हरी सब्जी खाइए। आप जैसे बनाते वैसे ही बनाइए, लेकिन एक कटोरी भर के खाइए, चटनी जैसा नहीं खाना। उसमें 2 बूंद नींबू का डालना है। हरी सब्जी यानी क्या? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन यानी क्या? विटामिन ए। देन इट कंटेन बी ग्रुप विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, निकोटीन, ऑल बी ग्रुप विटामिन। एंड ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं? 2 बूंद नींबू का जूस डाल रहे हैं। तो नींबू का जूस उसमें जैसे गया तो विटामिन सी भी हो गया। एंड अनदर एडवांटेज विद विटामिन सी इज व्हाट? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो ये हरी सब्जी आयरन भी उसमें है, उसमें कैल्शियम भी है। सो इट्स एब्जॉर्प्शन बिकम्स वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी। कोई भी टॉनिक इतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना आपका हरी सब्जी और नींबू का रस 2 बूंद, पूरा नींबू नहीं निचोड़ना है, 2 बूंद भी डाले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट हफ्ते में हम 14 टाइम खाना खाते, 14 टाइम्स वी आर ईटिंग लंच एंड डिनर, प्राइम जो हमारा फूड है। तो उसमें से 3 बार हम हरी सब्जी नहीं खा सकते, साग वाली सब्जी नहीं खा सकते, लीफी वेजिटेबल नहीं खा सकते? खा सकते, बिल्कुल खा सकते। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर फीमेल ऑल्सो, फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। अनदर एडवांटेज, इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर, पेट साफ होने में मदद हो रही है। अनदर एडवांटेज, खाली डाइटरी फाइबर है, एनर्जी नहीं मिल रही, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? मोटापा आ जाता है, फैट्स, लिपिड्स डिपोजिशन इंक्रीजेस। सो इफ यू विल स्टार्ट विद दिस डाइट, पीपल आर गोइंग डाइटिंग मींस व्हाट? एक टाइम का खाना हमने बंद कर दिया, डॉक्टर साहब गलत कर रहे हैं, वेरी रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ दैट यू गो विद दिस, हमारा स्टमक है, हम एक बार खाना खा लिए, फिर एक नियोला भी, एक नेक्स्ट ये भी नहीं जा सकता अंदर, तो सिस्टम बनाई हुई है। You take good amount of food, but what kind of food we should eat? So leafy vegetable I will recommend. So that is one of the very important thing what we have to go with. मैंने क्या बोला? 3 टाइम हरी सब्जी, हफ्ते में 3 बार। प्लान कर दीजिए, टाइम टेबल बना दीजिए।
सब्जी वाला जो लेके आता है वो उधर देखना, वो लिमिटेड सब्जी लेके आता है, उसमें से हम हमारी जो पसंदीदा है, मेरे घर में किसी को पसंद है, उस हिसाब से लेते हैं। नहीं, वी शुड प्लान आवर डाइट। मेथी, करडई, आंबट चुका, तांदूळ का, आंबाडी, माठ, पोकळा, चंदन बटवा, शेवगा, एन नंबर ऑफ पाले भाजीज आर देयर, सो वी कैन टेक हेल्प। कार्डिया मीन्स कार्डिया। मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला बनाऊं, मूली की जो पत्ती है वो आपका किडनी के लिए अच्छा है। So every day we can eat, at least 3 times in a week we can eat. That is one thing. Another formula is Panchamrut Khichdi. Pancham यानी 5. Now what you will think about this Panchamrut Khichdi? तो मूंग की खिचड़ी, वो भी छिलके वाली दाल, उसमें क्या करना है आपको? 5 सब्जी आपके फ्रिज में है, शिमला है, बैंगन है, कद्दू है, यू आर हैविंग लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच, पालक है, 5 सब्जी थोड़ी थोड़ी लेनी है, उसमें डाल दीजिए। तो हम तो ऐसे सब्जी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? फिर हम खिचड़ी में क्यों डालें? एक सवाल आएगा। माइंड यू, जिनके बच्चे घर में, वो सब्जी कैसे बाजू में निकाल के रखते हैं मुझे मालूम है। हाउ दे अवॉइड दैट पर्टिकुलर वेजिटेबल आई नो। हम क्या करते हैं, खिचड़ी को प्रिपरेशन के टाइम में उबालते हैं, पूरा उसका निचोड़ उसमें आ जाता है, ऑल विटामिन मिनरल्स कम्स इन खिचड़ी। वो बाजू में भी सब्जी निकाल के रखे, तभी भी आई थिंक दे विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। And no doubt, exercise on other side. So I usually recommend Surya Namaskar to increase height, to maintain weight, to for menstrual disorders like dysmenorrhea, जिनका पेट में दर्द होता है मेंसेस के पहले, and wonderful even concentration improvement, memory improvisation. I recommend this 6 Surya Namaskar I start with, and I ask them to progressively increase up to 12, and then I don't ask them to increase बिकॉज रोज थोड़ा खाना चाहिए। एक ही दिन सब खा लिया, 120 सूर्य नमस्कार कर दिए, 4 दिन बेड पे रहे, इट हैज नो मीनिंग। सो 12 कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डाइट रेजिमेन एंड एक्सरसाइज। सो आई ऑलवेज गो विद माय आई ऑलवेज गिव दिस काइंड ऑफ एडवाइसेस, काउंसलिंग इजीली एक्सेप्ट नहीं होते हैं, राइट? हाउ मच वी पेशेंट कम्स विद कार्डियक कंप्लेंट कि अभी क्या करें, मुझे तो मीट रोज खाना है, मुझे तो चिकन रोज खाना है, मुझे ये खाना है सब, ठीक है ना? सो माइंड यू, आई रिकमेंड देम सम अदर मेथड्स। आप हफ्ते में एक बार खा रहे तो 15 दिन में एक बार कर दी। इंस्टेड ऑफ मीट एंड चिकन यू कैन गो विथ फिश। फिश इज हैविंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सो फिश कैन वर्क। सो आई सजेस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? एंड नाउ लिटिल अबाउट द रिसर्च what I can go with. So homeopathy is having number of institutes which are dealing with this research. Ministry of Ayush is there, Central Council of Research in Homeopathy. We are working very closely with them, and near about 60 researchers are there up till now. National Commission of Homeopathy is very recently established, and they are also very keen to be, we have to develop this scientific perspective of our science. Then there are pharmacopoeia laboratory. Medicine जो आता है, it has to get approved from pharmacopoeia, नहीं तो मार्केट में नहीं आ सकता है। तो होम्योपैथी की रिलायबिलिटी उस पे है, हम बनाते नहीं हैं, it comes from company, and company get approved from these laboratories. Then National Health Portal also includes our science. So we are having number of companies which are preparing this medicine, like Helios and UK based companies like Recwig, and then Dio and various medicinal companies. International market is there for this, right? The people who are criticizing and saying placebo and other things, mind you, why this industries will put their energy and funds and everything. So mind you, they are doing a wonderful job, scientific preparation of medicines, right? Our Honorable Prime Minister, Narendra Ji Modi, recently inaugurated National Institute of Homeopathy at New Delhi. And mind you, the budget of this institute is 300 crore. So can you imagine what kind of strength they have placed? So this science has a wonderful future, I will say. And no doubt Central Council of Homeopathy is also there, NCH is also there. And yes, definitely I would like to mention some. I have done near about 22 research papers, but some of them are wonderful. Our Honorable Vice Chancellor ma'am worked with me with this project, a prospective cohort study determined zero prevalence of COVID-19 IgG antibodies, and it's so you'll find my college, myself, I was a coordinator, and then Government Medical College of Dhulia was involved, and we got certain informations and we worked together,
and I have published my paper, and it is my honor that the name of a vice chancellor in my paper. So that is why I'm deliberately placing it over here. Otherwise, there are n number of patients. This is a work what we have done. We went to the Malegaon. We have collected 3 ml blood. We had to convince people. It is not easy job. We had to learn the Urdu also, Jasveer sir. And आप हमारे program में शिरकत करेंगे क्या? I like this kind of word we have learned, and really people helped us and they loved us like anything. So I really, I miss Malegaon. Whenever I go over there, people comes to meet me because of the interaction what I can develop. So we were there, Malegaon. I'm collecting the blood, 3 ml sample. Then these are the examinations in certain other camps. We are going to the rural areas for NSS camps. We are residing there for 7 days, and we are doing orthopedic cases. Several cases are there. So this presentation is over. And sir, if you'll permit 10 minutes further, so I'll just go with NSS slides. So if you will permit me, I can go, sir. Yes, sir. Sir. If anyone is having doubt over here, you can ask. Otherwise, then I will go with NSS. Or should we ask? We should have question answer session at the end, sir. Correct, sir. Correct, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you see the slide, sir? Is visible, sir? Yes. So I'm going with my another presentation, and I got opportunity because Dr. Bedkar sir permitted me. And this is also one of the very close subject for my heart. And I'm a program officer of NSS for my college since 2000. And it is almost 23 years. I initiated this program in my college. And definitely we have moved further, and I have been selected as a NSS coordinator for Maharashtra University of Health Sciences for 5 to 6 districts, and we are working with them also. And we are doing such a wonderful job. All those districts, the medical colleges are doing wonderful job. So can you see the next slide, sir? First slide. Yes. Now this is at my college. I'm a program officer, while assistant program officers are also there. Their help, their need is always there, because any social activity is not a job of a one person. So it is like I remember dahi handi. मैं तो एक ही example देता हूँ कि जैसे नीचे बड़ा बड़ा mob रहता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, and one person stands above. So I think I'm standing at the end. But there are a number of people really working for this science.
So we know the principle of this. We have to identify the need and the problems of the community involved. So usually we are not implementing programs just like हमारे मन में आया वो program करेंगे नहीं. What is the need of that community? We are going over there, we search, we make a survey, and then we think what we should be done. And it is not one person, one individual or management is taking role. But here we sit together, the whole NSS unit sit together, consultation, and such a wonderful and brilliant ideas. The students are there, they are the minds of a James, and they are coming with the wonderful ideas, and we can implement them perfectly. And it also gives a sense of ownership. And when there is a sense of ownership, people start working by themselves. There is no need of pushing them, no need of motivation. The self-motivation comes. Utilize their knowledge in finding practical solutions of the individual and community problems. Develop competence required for group living and sharing the responsibilities. So we try to, we go with the group living. Means we are going in a 50 students or 60 students. We are going to the one village tribal area like Palsan, Surgana. And in that Palsan, we sit together, we are living together. We are cooking together. We are, having our own, the boys' rooms and gents' rooms, but the cooking is given. One team goes for, some other activity, school health checkup. They go for medical camp. So mind you, they are living, and there is quite a good interaction between students in themselves and teachers and students themselves. So it gives opportunity. Develop capacity to meet emergencies and natural disasters. So mind you, sir, I will tell you the whole unit, that our unit of NSS has gone for various disaster management problems. Like, the 26th January, there was earthquake, Bhuj and other places. So our unit was one of the unit went over there to serve those people for 15 days. In disaster, there are so many problems. There is a problem for others. We cannot ask, हमें रहने के लिए क्या जगह, खाने के लिए क्या है. We cannot ask, and the students really worked very hard over there. So it was there at Kashmir. Kashmir में फ्लड होने के बाद में हम गए थे, 15 दिन वहां पे रुके थे. I really experienced, such a beautiful people. इतनी क्या मेहमान नवाजी जो है इतनी अच्छी तरीके से की. The image what was there in my mind was washed out. और आज कश्मीर नाम लिया तो मेरा emotions अलग हो जाती है. इतने प्यारे लोग हैं. So I stayed with them for 15 days. So I think this is one of the very important opportunity we got because we are working with the NSS. And no doubt national integration and to develop our society, social harmony, we are playing a role. Now here we are going with the regular activities as a medical institute. The other institute goes with some other objects, but we are going with the school health checkup. The whole school we screen out. क्यों करना screen? To identify illness in an early phase. Dental caries, eye problem, throat problem, tonsillitis, skin diseases, abdominal complaints. So we screen all apparently healthy children, and then we segregate. And those students require medicine, we give medicine free of cost. No doubt, on the same time, at that particular place, we go with medical camp also, and we are prescribing homeopathic medicines. There is one very important project I have started in the year 2000, domiciliary healthcare system. So domiciliary means ghar pe jaake. So my 2 students goes house to house, 5 families, 1 person will adopt. And throughout the year, for 2 hours every Saturday, works over there. I made a record book, nutrition aspect, social aspect, this aspect we are going with, and that is the extension activity we are going with. Then street play and happy hippo show we are going with. So I was trained by one of the Russian director, Happy Hippo show, where we are putting the problem of that particular community in front of people, and then we try to ask question, what is the solution for it, and the people only give solution. जहाँ पे क्वेश्चन रहता है वहीं पे सवाल रहता है, सब जहाँ पे सवाल है जहाँ वहीं पे आंसर है. तो mind you, this kind of work we are doing. Blood donation program, national health program, pulse polio like program, 3rd 3 तारीख को भी हमने किया. Rallies we are going with to make people aware and sensitize. Then we are going with the Swachhata Abhiyan, communal harmony. Then we are going with the tree plantation. Then organ donation programs. Then we are going with the International Yoga Day.
the International Mental Health Day, International Women's Day. These are the list of pulse polio program. I have maintained records since last year, 2016 up to date. Then these are the blood donors and the number of blood donors. So usually we crosses 100 because we are carrying 2 to 3 medical blood donation camps. And now we have developed birthday blood donation club. And with the help of super specialty hospital Nashik, one of the blood transfusion officer, government blood transfusion officer, Dr. Purushottam Puri is helping us. And we are running this, and mind you, whenever and wherever they required blood. I remember that Metro Hospital, now that blood bank supplies blood to Nandurbar and other districts also. So wonderfully, we are not going with the private blood banks like this because that doesn't help us, whenever the needy patient comes. I'm very sorry to say, but this is a fact. That is why we are stick to this since last 15 years. Then school health checkup programs and number of school health checkup programs. I'm having record. The number of students are mentioned in the other side. I will not read the names, but the records are there. The statistics is there, and we are having number of papers on this. Then medical camps. I am having record and how many patients we are seeing. That record is also there. And organ donation programs, definitely to create as a medical faculty, we are there to create organ donation. So happy show, that is street play, rallies. Then we are having programs, big programs we are doing with the organ donation, and we make people aware. We are organizing seminars and webinars. If anybody is interested, we can send the resource person. My department person, teacher, he is involved with Green Corridor and real organ transplantation work. So we can go with this also. So number of activities we have done with organ donation. Swachhata Abhiyan, we have done number of activities. I have maintained those statistics. Now something pictorial which people will really appreciate. So this is a NSS special camp, how people and how the local people, the police and Talati and everyone get together, and we are working for one motto, Sarve Sukhina, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. Then we are organizing some street plays. We are taking pledge. Then this is a group discussion, गट चर्चा, है ना. मैंने एक बार शायद बोला था कि दारूबंदी के लिए हमने गट चर्चा की. सब फीमेल वेयर सिटिंग एंड वी आस्क क्वेश्चन, किसका हस्बैंड दारू पीता है. एक ने बोला मेरा पीता है, बाहर ही पी के आता है. दूसरा बोले मेरे घर में पीता है लेकिन मारता नहीं है. तीसरी बोली मारता है मुझे. चौथी बोले मुझे इतना जोर जोर से मारता है. तो पांचवी बोले तेरा पति तो तुझे मारता है, दूसरा तो नहीं मारता है. So it is a fact, accepted fact for those people. Such a surprising, things we could get. And you can see me working on the Happy Hippo show myself. I participate. Usually I develop that enthusiasm among the people also. So this is opening ceremony. We take, all spiritual communities also with us. Then medical camps, how people are getting involved. The students get exposure, clinical exposure. वो चेक कर सकते हैं, पेशेंट को हाथ लगा सकते हैं. प्राइमरी केसेस वी आर गेटिंग. हमारे अर्बन एरिया में बैठे तो फाइल लेके आते हैं, ये इधर गए थे, इधर गए थे, इधर गए थे. इधर हमें डायरेक्ट पेशेंट हम डायग्नोज पहली बार करते हैं, ऐसे ट्राइबल एरिया में जाते हैं. सो यू कैन सी हैप्पी हिप्पो शो, वन ऑफ द, एक इस पे भी हो सकता है सेमिनार सर. तो आई पार्टिसिपेट एज बाबा, भोंदू बाबा, एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, एज देयर इज अ सुपरस्टिशंस टू मच एट Surgana and the tribal areas. And this is a unit of our NSS, and the police people, the administration, they are appreciating our institution head, the trustee. And usually I call all people, village authorities, to support our activities, and really it helps a lot. We are doing anthropometric measurements, the height, weight, growth, growth monitoring. We are doing certain conditions, we'll find out which are not so much visible in our urban areas. Then home visits we are making, health surveys, we are collecting information, clinical examinations. Our students, the budding doctors, they are playing a role in this. And some students are coming from other states also. They are also, learning the language. गांव की लैंग्वेज और अलग है ट्राइबल एरिया की, वो लैंग्वेज वो सीखते हैं उधर. We go with the yoga. Usually our day starts with the yoga at National Health Services. And then
nutrition and health. We recently we have done a survey on malnutrition, clean hand techniques. We are teaching them, and school health checkup. And these are the some laurels we are having. Road safety. So the corporates are there. Vector-borne diseases, machhar bhagao, dengue bhagao, cleanliness, yoga, tree plantation. Here we are given, these cans also, so they can conserve those plants. So DHC, as I said, that is one of the family adoption program we are running. Independence Day rallies, World Health Organization days. These are the happy post show people are doing. Street play, Patanatya, what we call as. And this is a Kashmir, I was talking about. So a post-flood disaster, we went over there. And mind you, Kashmiri was very difficult for me. So I was taking help of the local people to translate Kashmiri language, and I was giving medications. Kumbh Mela, we have worked wonderfully. 36 centers, we have deputed doctors. Communal harmony, we are working. Happy post show, I told you. Emergency medicines, we are teaching our students. So whenever there is any kind of disaster, we can rush. And I remember Chiploon, Sangli, then your Surat, Kashmir, n number of places we had gone for this. As soon as we get information, हम ज़्यादा सोचते नहीं है, फटाफट बैग लगेज भर के जितना सामान लगता है मेडिसिन चाहिए, we take them and we reach to the place. So Women's Day Awareness Program, recently we have done. Pulse Polio Program, we are having national health programs, group discussions. And these are the awards I received from the university, from the Vice Chancellor. This is organ donation in front of 3,000 population. We have done this project. Then we went to that Kishore Sudharalaya. We are treating those people also. Maharogya Shibir, which has taken place in Maharashtra. Swachhata Abhiyan, tree plantation, organ donation rally. And it is very proud to say that some of my students, I motivated them. They went to national level state parade, national and state parade also. So she went to state parade. And very recently, Dr. Ritika Dubey went to Delhi for this national parade. So these are some certain certificates I have received. My unit have received. I have got certificates from Maharashtra Shasan. Some of my students received as the best volunteers. And what we learn at the end, not me but you. Ami tumcha karta ahot. I think that is a theme what I have learned in NSS. So with this, I will conclude, but only one thing I will say, in NSS camps, especially residential camp, our day starts with the prayer and then we go for yoga. Then we prepare breakfast. Then we start, for the 3 padas. हर दिन 3 पाड़ा, 7 दिन के लिए 21 पाड़ा कवर करते हैं. One team, in a rotation, the teams are made A, B, C, D, E, F, and they are going for, one team go for survey, one team go for school health checkup, one team go for medical camp, one team go for, MCH, that is maternal child health care, one team for street play, and one team for food. So like this, we are working and the students are getting great exposure. And I feel NSS is one of the program which really brings the potential of the people. So with this, I will take a opportunity to thanks Dr. Bedkar sir for giving me such a opportunity. And, I could present both the topics at one time. And it is really blessed to have people like everyone sitting over here and listening to me. Thank you very much. इतना बोलना चाहता हूं कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. सर, हमारी ये जो वर्ल्ड सीरीज है ये ऐसी ही और जोरों से चलती रहे, ये सबसे प्रेयर करता हूं. और इधर मैं रुकता हूं, जिसको क्वेश्चन आंसर करने वो कर सकते हैं. थैंक यू.
जी नमस्ते शुक्ला सर, नमस्ते। नमस्ते पहले सर तो जी। शुक्ला सर से शिकायत कर देता हूँ कि 1 साल से ज्यादा ही समय हो गया होगा एक साथ एक परिवार की तरह इतनी अच्छी जानकारी लेके बैठे थे। अभी तक तो आपके सर 2-3 कार्यक्रम हो जाने चाहिए थे। जैसे होम्योपैथिक को लेके तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कार्यक्रम है आपका, और इसकी तो हर व्यक्ति को जरूरत है। पहला तो ये सवाल करूंगा सर मैं आपसे कि होम्योपैथिक को थोड़ा सा हम समाज में पीछे क्यों देख रहे हैं, जबकि जो होम्योपैथिक से जुड़ा वो उसके फायदे तो खूब जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं एलोपैथिक की तरफ भी हमारा झुकाव ज्यादा ही है। इसका एक रीजन जानना चाहूंगा कि हम होम्योपैथिक की तरफ थोड़ी स्पीड क्यों नहीं है, थोड़े जल्दी क्यों नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा धीरे क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात सर, सही बात की आपने। इसके 2 वजह है। द फर्स्ट रीजन इज, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग टू दैट लेवल जितना होना चाहिए। अभी आप बाकी स्टेट में देखेंगे, बंगाल में होम्योपैथी प्रॉस्पर कर रही है, केरला में है, यूपी में टू सम एक्सटेंट, बिहार में टू सम एक्सटेंट, बट जितना स्कोप देना चाहिए, जितना एलोपैथी आयुर्वेद यूनानी को मिल रहा है उतना नहीं मिल रहा है। पहली चीज, जितना सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने 300 करोड़ दिए हैं और उधर कुछ हमारा कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज है कि आयुष मंत्रालय अलग बना है, तो वो एक अच्छी चीज हुई है। और एनसीएच, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, एक अलग बना है जो गवर्नमेंट का बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अभी इलेक्टेड सिलेक्टेड बॉडीज नहीं है। तो आई थिंक इन कमिंग फ्यू इयर्स एंड डिकेड यू कैन सी द चेंजेस। दैट इज वन थिंग। हमें डेप्यूटेशन नहीं देते लोग ज्यादा करके। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, रूरल हॉस्पिटल है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पे हमें डेप्यूटेशन नहीं मिलता। ये एक वजह है पहली चीज कि हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट देना है। इसलिए हम हमारे कुछ लोग जो है अभी मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में, इधर उधर हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमें आगे बढ़ाए। मैं पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत फाइट कर रहा हूँ कि पब्लिक हेल्थ में हमारा रोल बड़ा हो सकता है। हम 5-5.5 बरस देते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, हम हॉस्पिटल अटेंड करते हैं, हम क्लिनिकल एक्सपोजर पूरा लेते हैं, हम पूरा कैपेबल है जब, तो हमें क्यों यूटिलाइज नहीं किया जाता है? अंडर यूटिलाइज हो गए। तो माइंड यू, हमारे होम्योपैथी जो है, हम होम्योपैथी से ही ट्रीट करना चाहते हैं। मैं तो हमेशा आई इंसिस्ट, आई डोंट वांट दैट दिस पीपल विल गो एंड प्रैक्टिस एलोपैथी। हमारे इधर एक सेंटेंस है सर, सिंपल सेंटेंस है कि एलोपैथी मैं करूंगा समझो, तो मैं कौन सी एलोपैथी करूंगा? फर्स्ट क्लास एलोपैथी करूंगा कि थर्ड क्लास करूंगा? मेरे को नॉलेज है नहीं एलोपैथिक मेडिसिन का, मैं थर्ड क्लास एलोपैथी करूंगा। तो क्यों मैं एलोपैथी की प्रैक्टिस करूं? मैंने क्या सीखा है? मैंने होम्योपैथी सीखा है। तो आई शुड वर्क एंड सर्व फॉर माई साइंस, है ना। कौन बड़ा करने वाला? कोई बड़ा करने वाला नहीं, मैं खुद बड़ा करने वाला हूं। हर एक ने ऐसा सोचना चाहिए। आई थिंक दैट इज वन थिंग। अनदर वजह जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एलोपैथिक जो मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। वो आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। यूएसए में, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं होम्योपैथिक साइंस को। लेकिन आज तक वे होम्योपैथिक साइंस जिंदा है, ये बिकॉज ऑफ ऑल पीपल लाइक यू। एवरीवन टेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन। पहले होम्योपैथी लेना, क्योंकि आज साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और परमानेंट इलाज है, तो पीपल आर कमिंग विथ अस। आम्हाला लोकांचा सगळा सपोर्ट आहे। म्हणजे राज्याकडनं जसा पाहिजे तसा नाही, पण लोकांकडनं सगळा सपोर्ट आहे. So these are the two reasons, I think. But I will tell you the second most pathy where people are using this remedy. And I will, I really had seen, we are fortunate. Of course, we should not say fortunate, but we had seen the effect of homeopathic arsenic album. The CCRH has published, certain this research paper where they have acknowledged us. So mind you, the homeopathy is doing wonderful. These are the basic some reasons, sir, and definitely we are fighting since quite a long, but there will be a justice. We are hoping for the justice. We are very optimistic. Thank you, sir. सर एक और पूछ लेता हूँ। सर आप होम्योपैथी का फ्यूचर यानी भविष्य किस दृष्टि से देखते हैं? आने वाले दिनों में हम ऊपर जाएंगे और कितना समय लग सकता है? सर होम्योपैथी का जब गवर्नमेंट तय करेगा, आज CHO करके पद आया है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर,
वो दूसरे आयुर्वेद को देते, यूनानी को देते, होम्योपैथी को क्यों नहीं दे रहे? ये फाइट कर रहे सर हम, एंड डेफिनेटली वी विल कम फॉरवर्ड. एंड माइंड यू सर, मैं आई विल टेल यू वन थिंग, माय, अगर मुझे पर्सनली आप जानना चाहते हैं तो आई एम हैविंग पेशेंट्स फ्रॉम रशिया, आई एम हैविंग पेशेंट फ्रॉम टेक्सास, मैक्सिको, आई एम हैविंग पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, and I'm sending the medicine to Qatar. So I don't think, you know, what the perception you are having, itna niche nahi hai homeopathy. Some of my colleagues, they are going, you know, in a month 2 times Dubai ka clinic chala rahe. Koi ja raha hai Canada mein clinic chala rahe. And we are earning a good amount, sir. We are like more than consultant we are earning, sir. So I don't think, you know, nowadays people are going towards homeopathy in urban area, at least in Mumbai, Pune. I can see, you know, people are having a wonderful corporate hospitals, corporate clinics, where they are charging good amount, 12,000, 10,000, 5,000. So good amount, more than physician. Thank you, sir. नमस्कार. आपका बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा, और आप काफी इस क्षेत्र में काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो आपका अनुभव और ही अच्छा है. दूसरा, आप एनएसएस माध्यम से भी जो है जो सार्वजनिक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, वो भी, और समाज के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है. होम्योपैथी के बारे में मेरे एक अंकल थे, वो इसलिए बचपन से मैं जानता हूँ, वो इलाज करते थे और अब तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके कारण मेरे को होम्योपैथी का मालूम. सबसे बड़ा है कि साइड इफेक्ट नहीं है जो एलोपैथी में होता है. मैं पूछना चाहता था कि जैसे बाकी सब में कहते हैं कि जैसे आयुर्वेद में, और कहते हैं कि जड़ से जो है, ये आजकल काफी लोगों को जो है थायराइड की बीमारी हो जाती है, तो थायराइड के लिए ऐसा होम्योपैथी में ऐसी कोई दवाई है कि जो उसको जड़ से खत्म कर सकती है? धन्यवाद सर. Yes, sir. Thank you. Sir, wonderful question you have asked. Nowadays, we are suffering with non-communicable diseases. यानी जो क्या बोलते हैं, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी कम हो गई, लेकिन डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म है, ये बीमारी ज्यादा आ गई. एंड द रूट ऑफ द डिसीज इज नॉट, यू नो, विथ अ डिसीज एजेंट. उसका जो कॉज है वो हमारी लाइफस्टाइल है, आमची जीवनशैली, how we are living, how we are surviving. If we are having, you know, since morning you are running and rushing behind money, and you are not doing exercise, and whatever food comes, you know, in Mumbai वाले कम देखना चाहिए आपने, खाली पाव वड़े पे लंच हो जाता है. So you know what kind of lifestyle we have acquiring, that has a root. अगर मैं वो रूट क्लियर नहीं करता हूँ, मैं मेरे को खुद को करेक्ट नहीं करता हूँ, तो कहाँ से बीमारी? डायबिटीज की गोली रोज खाते हैं, है ना, डायबिटिक की टैबलेट रोज खानी पड़ती है. तो डायबिटिक की गोली नहीं खाई तो क्या होगा? बीमारी चली गई क्या? नहीं, वापस वो जहां पे था डायबिटीज वहीं पे है. हमने तो कर्टन ही डाला था, हमने खाली दबा के रखा था, क्लिनिकली हमने सिम्टम्स दबा के रखे थे. तो जन्म भर, जिंदगी भर बाकी जो मेडिसिन है वो तो लेनी पड़ती है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि ये बीमारी क्यों आई. मेरा स्ट्रेस है, मेरे हैबिट्स है, कुछ अल्कोहल है, या सिगरेट स्मोकिंग है, टोबैको है ना, दिस काइंड ऑफ माय फूड इज देयर. मैं हफ्ते में 3-4 बार नॉनवेज खा लेता हूं और उसमें पूरा फैट्स भर लेता हूं. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर कमिंग टुगेदर. वी हैव टू आइडेंटिफाई. हमें हमारी जिंदगी में पहले झांक के देखना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं. बीमारी मेरी वजह से आई है. बीमारी मेडिसिन खत्म करती है, बात बराबर है, लेकिन अगर जब तक मैं को कांटे को नहीं निकालता हूं, खाली मलम लगाते बैठूंगा, तो बीमारी कहाँ ठीक होने वाले है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू थिंक. अगर अच्छा फिजिशियन है, वो क्या करेगा? आपकी बीमारी क्यों आया, आपके पास थायराइड क्यों आया है, वो देखेगा. खाली थायराइड की TSH लेवल कम करने का काम नहीं करेगा. वो बताएगा आप जरा वॉक पे जाइए 30 मिनट. यस्टरडे मैडम वाज टॉकिंग वंडरफुली, शी हैज एक्सप्लेन. 30 मिनट घूम के आई है, आपका मोटापा कम करिए, है ना. जो फूड सब्सटेंस नहीं खाने हैं, जैसे गोभी फ्लावर नहीं खाते थायराइड में, वो मत खाइए. एंड देन अलॉन्ग विद दैट यू टेक अ होम्योपैथिक मेडिसिन. तो मेडिसिन तो मलम हो गया, लेकिन हमने कांटा ही नहीं निकाला, तो मलम क्या काम करेगा बेचारा? ठीक है. आर यू गेटिंग माय आंसर सर?
जी जी सर, इसमें एक बात और मैं सोचा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं कोई नशा पता नहीं करता हूँ, मैं किसी तरह नॉन वेज नहीं खाता हूँ, ड्रिंक नहीं करता हूँ, और इसमें मैं एक्चुअली क्या, मैं बीच में 10 साल में नागपुर रहा था, तो मेरा पूरा विदर्भ का होलसेल का कॉपर वायर का बिजनेस था, तो उस समय क्या एक समय भोजन और होता था, तो हो सकता है उसी के कारण जो खाने पीने इसी के कारण उसी लैक से। ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है, बैठे बैठे काम, सेडेंटरी जॉब बोलते हैं हम, एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, वो हो सकता है। आपका बिजनेस टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है कि मुझे इतनी कमिटमेंट है, इतना करना है, तो सभी चीजें अपने बॉडी पे असर करती है। जी 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 सर, वो हो सकता है उसी कारण। फिर तो अब तो मैं जोधपुर में हूँ और अतिथि शिक्षक हूँ सैन्य विज्ञान अध्ययन केंद्र में, तो पिछले 9-10 सालों से अध्यापन और करवा रहा हूँ। सही और बात आपका है हमेशा सर। आपके आप आपके जी सर। श्रोता के रूप में तो आप हमेशा अच्छा जो करते हैं, आज आपने वक्ता के रूप में भी बहुत अच्छा जो है आपने अच्छा बढ़ा है। धन्यवाद विद सर। ऑल ब्लेसिंग्स सर, विद ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर साइड सर। सर आपके कक्षा में बताते जाइए, तंबाकू नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ये छोटे बच्चों को सिखाते जाइए, बड़े होके वो नहीं पिएंगे। तो थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा आप मेरी तरफ से उनको एक सजेशन दे दीजिए, ठीक है? जी सर, मैं तो हर तरह के नशे के खिलाफ। मैं तो हमेशा बच्चों को सिर्फ टीचिंग नहीं, उसको एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, अच्छा समाज का व्यक्ति बने, जी और सर। बुराइयों से दूर भी रहे और बुराइयों को रोकने का प्रयास करे। चाहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार है, या देश के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, या ये जो नशा पता आजकल के यंगस्टर्स है ये ड्रग्स में और इसमें, तो उन सब चीजों से जो भी हो सके इन सब चीजों से दूर होना बचपन से ही मेरे, और शुरू से मैं चाहता हूँ हर बच्चों को भी मैं सर, महिलाओं लड़कियों को भी कहता हूँ शिक्षक कि जो है, यही शिक्षक सब जो है। है बच्चों के दूसरे माँ बाप रहते हैं, और आप वो काम कर बस रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। उसी दायित्व को निभाने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से प्रयास है। कितना सफल हुए ये तो अलग बात, पर कोशिश है जारी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर जी। यस सर, यस सर। डॉक्टर स्वानंद जी के व्याख्यान से बड़ा आनंद मिला। बहुत दिनों के बाद एज हम पार्टिसिपेंट्स के रूप में इनको देखते आ रहे थे। आज वक्ता के रूप में सर ने अपनी बात यहाँ रखी, और सर की जो कम्युनिटी सर्विसेज है, कम्युनिटी अवेयरनेस है, दोनों बहुत उपयोगी रहे। अच्छा, बढ़िया, उन्होंने अच्छा काम किया है। कम्युनिटी अवेयरनेस के बारे में तो, या एनएसएस के बारे में तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन मैं होम्योपैथी के बारे में जरूर जानना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग तो बचपन से होम्योपैथी को देख रहे हैं, आप तो उनके साथ जी रहे हो। तो आज मुझे पता चला कि वो जो किस आत्मा, होम्योपैथी का आत्मा क्या है, तो सिमिलर क्योर सिमिलर, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही आपने प्याज का उदाहरण दिया तो मेरे दिमाग में आया कि सिमिलर क्योर्स सिमिलर क्या है। तो मुझे ये इस होम्योपैथी के बारे में दो सवाल रिलेटेड है। एक सवाल ऐसा है कि आपने कहा कि कोई भी पैथी वो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं करती ह्यूमन बीइंग पर, किसी और अन्य एनिमल पर या आती है, लेकिन आपके एक स्टेटमेंट में ऐसे कहा कि आपने वो हेल्दी लोगों को दिया है और उनसे भी डायरिया मांगी है, व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस, और उसके माध्यम से आपने उसकी क्या क्या, कैसे, कौन कौन से कोई डिस्टर्बेंस है? हेलो। यस सर जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम मतलब होम्योपैथी में आप डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को वो ट्रीटमेंट दे रहे हो, उनसे उनमें क्या एक्सपीरियंस हुआ उसके एक्सपीरियंस से डेटा ले रहे हो, तो ये इथिकली कैसे, एक शास्त्र के स्वरूप में कैसा सही है? और दूसरा सवाल था कि हमने कभी जब बचपन में या कभी अभी जब ट्रीटमेंट जब ली है होम्योपैथी की, डॉक्टर्स हमसे पूरी हिस्ट्री जानते हैं
मतलब हमारे बारे में, अपने बच्चों के बारे में, पिताजी के बारे में, उसके पिताजी के बारे में, वो हिस्ट्री जानने का कारण क्या है, उसका क्यों ऐसा सोचते हैं उस पर? डॉक्टर स्वानंद सर। यस सर। सर पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि ड्रग प्रूविंग, तो ये ड्रग प्रूविंग जो है ये प्रोसेस एक्सेप्टेड प्रोसेस है होम्योपैथी में, क्योंकि ड्रग प्रूविंग में क्रूड सब्सटेंसेस नहीं लिए जाते विच विल प्रोड्यूस टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट। कोई पॉइजन वाला इफेक्ट तैयार करेगा ऐसा नहीं होगा। तो यह अंडर कंट्रोल प्रोसेस रहती है। यहाँ पे हेल्दी ह्यूमन बींग्स पार्टिसिपेंट रहते हैं, वो कंसेंट देते हैं एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द लॉ। और होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी हम उनसे हासिल करते हैं कि ये ड्रग सब्सटेंस क्या कंप्लेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमारा जो एक सब्जेक्ट है मटेरिया मेडिका, जिसमें पूरे ड्रग सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो मिलती है हमें, जानकारी जो मिलती है, वो जानकारी हमें ये ड्रग प्रूविंग प्रोसेस से ही मिलती है। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक जस्ट टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग, लेकिन ह्यूमन बीइंग पे वो करने के बाद ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। व्हाट इट कैन प्रोड्यूस, इट कैन क्योर, दैट इज वन थिंग। दैट इज माय फर्स्ट आंसर सर। And second question you said regarding homeopathy? History taking. Now homeopathy believes in history taking because we want to know person as a whole. We treat the sick. We never treat the disease condition. We never treat the headache. We treat the person with the headache. We are not treating diabetes. We are treating the person with the diabetes. So we want to know that person एज ए होल। तो हम उनके फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं कि आपको हेडेक है, बुखार है, ये है, वो है। उसके बाद में माइंड सिम्टम्स पूछते हैं, आपका मिजाज कैसा है, आप गुस्से वाले हैं, जल्दी रोने वाले हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करते, मन में पकड़ के रखते हैं, या आप दिमाग में ऐसा रखते हैं कि मैं बाद में इसको देख लूंगा, रिवेंजफुल। तो ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन भी हम काफी करते हैं। सो इट इज वेरी टेक्निकल थिंग व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड एज केस टेकिंग। और वो केस टेकिंग करने के बाद ही हम मेडिसिन दे सकते हैं। आप बोलेंगे सर शुक्ला सर मेरे हेडेक है, मुझे भेज दीजिए मेडिसिन, मैं बोलूंगा सर माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं भेज सकते। आप आके क्लिनिक में बैठिए, या फिर मैं आजकल हमारा ऐप भी है, या मोबाइल फोन भी है, वीडियो कॉल भी है, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। देन आई विल टेक ए इंफॉर्मेशन, आई विल गिव इट। बट ये इसमें भी एक चीज है, अगर समझो एक पेशेंट है, अपेंडिक्स का पेन लेके आया है, बहुत सीवियर पेन चालू है, और मैं केस टेकिंग लेता बैठूं 1.5 घंटा 1 घंटा, इट हैज नो मीनिंग। तो हमें जो सिम्टम्स मिल रहे हैं उसके ऊपर पहले मेडिसिन फटाफट दे दीजिए। तो एक्यूट कंडीशन के लिए मेडिसिन फटाफट देना है, उसके बाद में हमें क्रॉनिक कंडीशन के लिए बाद में हम पूछताछ करते बैठ सकते हैं। तो ये चीज तो हो गई कि होम्योपैथिक में प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन समझना, दैट इंडिविजुअलाइजेशन, वो उसके खास, जो आदमी, हर एक बंदा अलग है, दुनिया में हर एक बंदा अलग है। इसलिए होम्योपैथी में अगर समझो हेडेक के वाले पेशेंट, सरदर्द वाले पेशेंट आ गए, तो हर एक के लिए कि पैरासिटामोल एनाल्जेसिक नहीं जाएगी, हर एक के लिए कॉज अलग है। एक का बिजनेस टेंशन था, एक का घर में झगड़ा हुआ था, एक धूप में गया था, दैट इज वाई। तो उनके मेडिसिन चेंज हो जाते सर जी। तो इसलिए केस टेकिंग लेना बहुत जरूरी है, और उसी के ऊपर हम मेडिसिन दे सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, होमिओपॅथीची जे प्रॅक्टिस करणारे जे फिजिशियन्स आहेत, हाँ सर बोला। त्यांना सर आता मध्यंतरी मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियानी एक 12 महिन्याचा रिफ्रेशर कोर्स, ऍडिशनल कोर्स करायला सांगितला होता ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करायसाठी। तर तो जो रूल होता तो कॅन्सल झाला का आता? नाही, तो रूल आहे, तो महाराष्ट्रामध्ये रूल आहे सर। तो बाहेर अजून कोणी ऍक्सेप्ट किती जणांनी केला मला माहित नाही, पण महाराष्ट्रात तो रूल आहे। नाउ व्हाट हॅज हॅपन दॅट सम पीपल they have already started practicing allopathy. They are not dealing with homeopathy. So to support those people, they develop this 1-year course. So they are learning pharmacology from medical colleges. Pharmacology. Yeah, they are learning pharmacology and they have to appear for exam.
They have to clear that exam, and then they will be getting that degree, so they can use certain medicines in their practice. ये तो क्या हो रहा था कि होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथी वाले सॉरी होम्योपैथिक डॉक्टर्स एलोपैथिक मेडिसिन बांट रहे थे. सो बाय द लॉ इट इज वेरी रॉन्ग. तो लॉ पनिश कर सकता है. टू सेव दोस पीपल दिस लॉ इज देयर. बट आई एम सेइंग अगेन कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी चाहिए और होम्योपैथी के पीछे ही लगना चाहिए. एवरीथिंग यू विल गेट विद होम्योपैथी. ये लोग क्या कर रहे हैं कि खुद को डेविएट कर रहे हैं, वो गलत है सर. लेकिन सर अभी जो पुराने हो गए वो बात ठीक है. हाँ, उनके लिए वो कोर्स चालू है सर. हाँ, लेकिन नए जो पीढ़ी ये है, नई बैच जो है उसके लिए एक फार्माकोलॉजी का अगर सब्जेक्ट दिया उन्होंने तो वो दोनों कर सकते ना फिर. हाँ, वो दोनों भी कर सकते हैं सर, लेकिन दोनों करने में क्या मजा है? आप होम्योपैथिक साइंस को खत्म करेंगे फिर, है कि नहीं? जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स अगर होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करने वाले तो होम्योपैथी आगे कैसे चलेगी? सो आई पर्सनली इंसिस्ट कि वी शुड प्रैक्टिस होम्योपैथी. ओके सर, थैंक यू. यस.
सर सर और एक एक चीज बोल देता हूं मैं, हमारे ग्रुप में जिसको भी होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए वो अपने सिम्टम्स पूरे डिटेल में मुझे भेजिए। अगर मुझे लगता है तो मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगा, आपको मेडिसिन का नाम बोल दूंगा, आप मेडिसिन उधर से परचेस कर लीजिए, या आपको मेरी तरफ से चाहिए मेडिसिन तो मेरी तरफ से भेज दूंगा सर। धन्यवाद सर। सर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है सरगम का, किसी का, उसने 2 बार डाला है, मैं बोलूं पढ़ क्या? लीजिए सर। हाँ मैं बोल देता हूँ, एक मिनट। इन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन टैबलेट्स एंड लिक्विड मेडिसिन इन होम्योपैथी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैबलेट एंड लिक्विड मेडिसिन इन होम्योपैथी? अभी देखिए जो टैबलेट्स एलोपैथिक मेडिसिन है आयुर्वेद बनाते हैं उसमें पूरा ड्रग सब्सटेंस भरा रहता है और वो आपको चबाएंगे तो कड़वा लगेगा। होम्योपैथी में क्या करते हैं कि ग्लोब्यूल्स जो बनाते हैं, जो पिल्स बनाते हैं, जो मीठी गोली बनाते हैं, वो शक्कर है जो बकरी के दूध में मिलती है, वो शक्कर से इंडस्ट्री है उसके लिए, उसमें बनता है वो आइडियली, और उसमें मेडिसिन ऊपर से डाला जाता है, मेडिसिन अंदर नहीं रहता उसके, वो ऐसे खाली गोली खाएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब डाइल्यूशन, जब हमारा होम्योपैथिक जो मेडिसिन लिक्विड रहता है पोटेंसी में आता है 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी, तो एज पर द डिसीजेस ऑफ द पीपल, एज पर द डिसीजेस ऑफ द पीपल वी प्रिस्क्राइब द पोटेंसी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने अपने हिसाब से मत लीजिए, मैगजीन में आ जाता है होम्योपैथिक ये मेडिसिन खाओ, आजकल तो गूगल ब्राउज पे आ जाता है ये खा लो ये कर लो, बट जो पोटेंसी सिलेक्शन है वो एक बहुत रिफाइन आर्ट है। और होम्योपैथी जो है वो खाली मेडिसिन नहीं देते, वो उनको सब मालूमात रहती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, डिसीजेस, बीमारियों के लिए बार सब इंफॉर्मेशन रहती है, तभी वो सोच समझ के कौन सी गोली खानी है उसमें मेडिसिन डाला जाता है, डॉक्टर वो डालता है, बहुत सोचता है। ऐसा नहीं कि फटाफट कट करके मेडिसिन दे दी आपको, ऐसा नहीं है, वो बहुत सोच के देता है वो गोली और फिर हमें वो लेनी है। ठीक है। बेटर सर, मुझे ऐसा लग रहा था, गिल्टी गिल्टी लग रहा था, मैंने प्रेजेंट नहीं किया, मैं एक साल सुनता रहा हूँ, खाली मैंने मेरा स्वार्थ देखा है, ऐसा लगा मुझे, इसलिए। सर आप मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी दीजिए, आई विल बी देयर फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर। शुक्ला सर एक क्वेश्चन दुर्गेश ने अभी डाल दिया है, विच मेडिसिन इन किडनी स्टोन इन होम्योपैथी? हाँ, अभी किडनी स्टोन के लिए जो मेडिसिन है, तो एक जो मेडिसिन है जो ग्लोब्यूल में, जो पिल्स में, स्वीट पिल्स में दिया जाता है, वो उनके जो लक्षण है उसके ऊपर से दिया जाता है, और उसके साथ में बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो है, एक टिंचर है बर्बेरिस वल्गेरिस करके टिंचर है, उसके 10 बूंदे सुबह शाम 1 गिलास पानी में लेना है,
तो वो पथरी गलाने में मदद करते हैं। तो बर्बेरिस वल्गेरिस और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का तो इतना लाजवाब इलाज है वो। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए या मुझे कंसल्ट करिए, कोई पेशेंट है तो। एक पेशेंट सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से मुंबई से मेरे पास आया था। उनका जो पथरी था वो लेडी पेशेंट का, वो पेशाब के रास्ते पे रुक गया था और हर ब्लड प्रेशर वाज 210/110। तो उधर के किसी ने रिफर किया कि भाई पहले स्टोन निकालो, स्टोन निकालेंगे तो बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। So they came to me. They were basically from UP, and then they came to me, and then I saw the patient. I'd given one dose, 1 or 2 doses, and then I asked them, "You go home and tomorrow morning tell me what has happened." At 3:30 midnight, I got a call. सर बहुत पेन में है, जैसे लेबर पेन है ना, जैसे डिलीवरी के पेन आता है वैसा पेन में ऑलरेडी। तो मैंने बोला ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, आई विल कम टू योर प्लेस, वी विल गो टू द हॉस्पिटल एंड वी विल गेट एडमिटेड दैट लेडी बिकॉज शी इज इन सीवियर पेन। हम इतना रोक नहीं सकते। आई रीच टू माई कार एंड आई गॉट अ फोन कॉल दैट स्टोन हैज कम आउट, दैट इज द मैक्सिमम साइज स्टोन आई हैड टेकन आउट। वसाइकल कैलकुला बोलते, ब्लैडर कैलकुला। तो 2 सेंटीमीटर लेंथ में था, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ में था, वो बुलेट जैसा आया। एंड दैट लेडी कोलैप्स्ड इन लिटिल, बेहोश हो गए, वो अनकॉन्शियस हो गए। आई सेड दिस इज वेरी कॉमन, शी वाज इन सच अ अगनी। वो पेन निकल गया, अभी वो ठीक हो जाएंगे। एंड शी क्लियर। नंबर ऑफ इंसिडेंसेस आर देयर, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स रहते एकदम पीबल, यानी क्या बोलते गुलगुलित, क्या बोलते सॉफ्ट। तो I had seen, why one of my patient came with 3 days after 12 stones simultaneously, 12 stone maximum stone लेके आया। So that there is a quite good scope for renal calculi, but I will say you take plenty water, no spinach, पालक नहीं खाना, no टमाटर, टमाटोज नहीं खाना है। ये छोटी छोटी परहेज करते रहिए, आपकी बीमारी से आप दूर रहते रहिए। 2.5 लीटर आप अगर ऑफिस में काम करते तो पानी पीना है, सुबह से लेके दोपहर तक 1 लीटर, दोपहर से लेके शाम तक 2 लीटर, शाम से रात तक 2.5-3 लीटर पानी आराम से जा सकता है। तो पानी पीते रहिए, मोबाइल रहिए, जरा एक्सरसाइज करिए तो स्टोन होगा ही नहीं। शुक्ला सर, एक क्वेश्चन और चलते चलते कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत है। सरगम केसरी ने बहुत क्वेश्चन किया है, काइंडली सजेस्ट सम कोर्स टू लर्न होम्योपैथी। बस लास्ट कोर्स आई विल नॉट रिकमेंड अ स्मॉल क्रैश कोर्सेस, बट आई विल से 12वीं के बाद में, 12th के बाद में आपको नीट देना है, और नीट थ्रू यू विल गेट एडमिशन इन द BHMS कोर्स, दैट इज अ प्राइम वे टू कम, है ना। सो 12th में साइंस लेके आपको अच्छे मार्क्स पाना और नीट में अच्छा स्कोर करना, फिर DMRE थ्रू आपको एडमिशन लेना। मेरा बेटा भी होम्योपैथिक डॉक्टर बना, ही हैज आल्सो गॉन थ्रू द सेम, 12th में अच्छे मार्क्स लाए, नीट में अच्छे लाए। ही वाज गेटिंग एडमिशन एट डेंटल कॉलेज और सम आयुर्वेद कॉलेज, बट ही सेड, उसने बचपन से मैं होम्योपैथी देखी, मेरे साथ में काम किया है। ही सेड आई विल कम टू होम्योपैथी एंड ही केम, and unfortunately he joined, means DMRE through government through, he joined my college only. So almost he has finished now, 3 months internship is there, then he'll go for post graduation. So there is no course like this. You go for better, 5.5 years course where you learn all aspects, scientific aspect. नहीं तो चालू डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा करना नहीं, ठीक है। Sir, all your blessings, everyone blessed, that is why. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Bedkar, sir, Principal, sir, Prashant, sir, the organizing committee. Your efforts, they are wonderful, and I really appreciate. कोई प्रोग्राम करना उसके लिए पीछे कितना दौड़ना पड़ता है मुझे मालूम है, and every day शो लगाना बहुत बड़ी बात है, सर. So thank you very much, and every day you are giving a feast, एक अच्छी चीज देते हैं हमारे ब्रेन के लिए. Thank you very much.
थँक्यू सर. कसं झालं? बहुत बहुत धन्यवाद बेडकर सर. आप